Hi everybody, we're back again this week. In Kissi roast me, it's Antara and Mira. Guys, we have been watching a lot of Hindi serials this week, and a lot of people are going to jail in Hindi serials. But jail for Hindi serials is very different from jail in real life because हिंदी सीरियल्स में आप किसी को भी कहीं पे भी उठा सकते हो, पुलिस घर पहुंच जाती है अरेस्ट करने के लिए और उसको फिर बेल नहीं मिलती है, कुछ भी हो जाए. I mean, they just twist around the law so much कि आपको भी नहीं पता ये असली लॉ है क्या. Now let's take for example अंतरा's favorite show. ये रिश्ता क्या कहलाता है. अंतरा, क्या बोलना है आपको कैरव के जेल जाने के बारे में? That was so मतलब stupid and आप बोल सकते हैं ऐसे blood boiling because the case against him is not of a murder or like first degree, third degree, manslaughter, nothing. गलती से भी push वाला case नहीं है. The case was literally abetment of suicide. कि maybe he did something that triggered the other person to jump. Anything which is not a murder or a rape or anything of sort, which is not a direct violence, physical violence on the third party, is a bailable. Most of the time, is a bailable by virtue of Indian law and a Supreme Court precedence that was set just a few months back. Everybody has a right to be free. It's a fundamental right. Exactly. Okay, so you cannot hold somebody without filing a charge sheet. And not being able to bail them unless a court says this person is going to prison for X amount of time. You cannot be holding them in custody. So before a person is sentenced, it's always custody. After sentence, it's prison. The person is not being sentenced. That's it. You cannot hold them beyond 24 hours for questioning. You can create provisos around their bail that they can't leave this area or they can do this or they can do that. And they have to come in and say hi to the cops every few days. You create those provisos, but never in real life can you keep somebody in prison and torture them without presenting them to the magistrate within 24 hours. And looking at like the state of the that guy was in, and they show that him being harassed in the custody, like any magistrate needs to take like one look at him and say like, okay, this person deserves a bail. And they could have presented his heart operation papers. Remember, he has a heart condition. He has a heart condition. Now he has developed like acrophobia. I forgot whatever, like fear of crowds. Anybody would. He's in a trauma. He's in deep trauma for doing literally nothing. Yeah. And just like they presented witnesses. Goenkas haven't presented Akshara as a witness because Akshara witnessed it. She saw the sister with the boyfriend. She heard overheard conversations for her. She knows everything. Why hasn't she been a witness? I mean, it is such a open and shut case that it angers me that you will create an entire drama around it, which is totally illogical. I think they're also saying that Kairav didn't want to disillusion the image of Anisha. So he was not saying anything in the custody. He was not defending himself. He was not either even during the police questioning, he kept quiet. So my point is, even if he decides to keep quiet, it's his prerogative. He can choose to keep quiet. Him keeping quiet is not him admitting to the crime unless someone says, yes, I did that. They're not saying anything. Is they have a right to remain silent. They can meet with their lawyer and that is a Miranda right anywhere in the world. You have the right to remain silent. Yeah, they generally people who are arrested, they choose to remain silent. They talk to their lawyers and come up with a strategy that works for them. That how should we present the case? What should be my statement? In this case, a lot of people are criticizing why is he quiet? He has his own thought process, जो मर गई है उसको क्यों उसका कैरेक्टर डिफेम करना, whatever. But the point is, उसको ना लॉयर से मिलने देते थे ना, उसको ऐसे ही दिखा है ना, उसको 3 दिन ऐसे जुडिशियल कस्टडी में उसको कहाँ से ऐसा कि कैसा लॉ है, मतलब who's writing these stories? Can directors cut production and not hire a legal consultant to write these stories with the writers?
Okay, the reason why they do this we know, like उनको भी पता है ये कोई चलने वाला नहीं है, but the point is कि ये चीजें ऐसी चीजें हैं ना जो ऑडियंस हम और आप जानते हैं, the audience, the common everyday audience, they think पुलिस सिस्टम इज सो करप्ट कि ये हो सकता है, कोई अगर सामने वाले बड़े इंसान को पैसा खिलाए तो पुलिस, क्योंकि इट हैपेंस विद कॉमन मैन, लाइक हम लोग को अजीब ये लग रहा है बिकॉज गोयनकाज आर रिच एंड पावरफुल, बट अगर कोई आम It's आदमी, आई not, हैव it सीन, doesn't, it cannot legally happen with a common man. If it's happening, then the cops will be suspended. They या will be बट suspended. But yes, पढ़े लिखे लोग नहीं हो या गरीब लोग हो उनके साथ, there could be a storyline कि उनके साथ ऐसा हुआ है, ज्यादती हुई हो. But Goenkas are not ill-educated. They are very, I mean, if I remember the story well, they're supposed to be extremely influential themselves. that's the whole thing, like उनको दिखा रहे हैं, like they are trying to call ministers and all that, and they are saying like villas have reached them out before, तो बोलते हैं कि क्या first come first serve का गेम चल रहा है कि किसने, कौन पहले इन्फ्लुएंशियल आदमी के पास चला गया और उसको अपने साइड कर लिया तो दूसरा वाला नहीं कर पा रहा है, उस पे कौन सा. It's terribly badly written. We're very sorry, but you just can't wrap up a story, show a baby and show Abhimanyu's abs and think uske piche koi bhi story likhoge and we'll wrap it up, because this is highly logical right there. This entire track is highly logical. मतलब unless कोई they had like a false witness or something ki, who said कि इसने push किया है, like who literally pushed it, like then it will come under. Even if the witness said उसने push किया, उसको फिर भी bail मिलेगी, because जब तक उसे court convict नहीं करेगा जेल नहीं जा सकता. वो तो है, but like manslaughter में कम से कम उसको थोड़ा like he gets harassed a little more कि किसी ने कहा है कि इसने मर्डर किया. हाँ, पर चार्जशीट तो फाइल करे ना पहले. वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा. वो चार्जशीट कैसे फाइल करेंगे? साइन भी नहीं कराया चार्जशीट. सही में ना, वो that's the whole thing. और ये ऐसा ये लोग पता है क्यों करते हैं, और ये लोग हमेशा ऐसा दिखा देते हैं कि पुलिस को ना इतना स्टूपिड दिखाते हैं when पुलिस, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि करप्शन नहीं होता है, इंडियन सिस्टम में करप्शन होता है, बट लाइक यू आर लिविंग इन अ सेकंड टियर मेट्रो सिटी एंड यू आर कमिंग फ्रॉम अ फैमिली वेयर पीपल आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, ठीक है, ऐसे सिटीज में यू कैन नॉट फूल द विक्टिम कि भाई ये लॉ ऐसी है, नहीं, दे आर वेल एजुकेटेड एनफ कि उन्हें पता है. तो ये लोग हिंदी सीरियल में हमेशा ऐसा दिखाते हैं ना कि द ओनस इज ऑन द इनोसेंट टू प्रूव देमसेल्व्स इनोसेंट. ये नहीं होता है. इट्स ऑलवेज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इट्स नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट. I know we're talking about ये रिश्ता, but like any other show, कोई भी आके रैंडम पर्सन FIR फाइल कर देता है बिना किसी एविडेंस के, पुलिस आके घर से किसी को भी अरेस्ट करके उठा के ले जाती है, उसको ऐसे डाल देती है जेल में, ऐसे वो खड़ा रहता है फिर उसकी ऐसे थोड़ी ना होता है. क्वेश्चनिंग होती है, चार्जशीट फाइल होते हैं, विटनेसेस होते हैं, मोटिव इस्टेब्लिश करना होता है चार्जशीट फाइल करने के लिए. ऐसे ही नहीं वो लोग केस बना के कोर्ट लेके जा सकते हैं. और अनलेस वो केस बनाते हैं बेल मिलती है. वो अगेन भाग्य लक्ष्मी को उठाकर जेल में डाल दिया फॉर फूड पॉइजनिंग. जेल कौन जाता है फूड पॉइजनिंग के लिए? प्रूव भी नहीं, तक कुछ प्रूव ही नहीं कर पा रहे. ना एविडेंस है ना उन्होंने फूड की टेस्टिंग की है, किसने डाला है, कैमरास, एनीथिंग, नथिंग, जीरो. और उसको नॉन अवेलेबल जेल में डाल रखा है कुछ, आई थिंक. एंड एकता कपूर के सीरियल में एक दिन इज इक्वल टू एक महीना. वो एक पार्टी हो रही होती है और उसके वो ग्रेन्युलर एपिसोड्स. The reason why her serials work for so many years is because वो एक दिन is equal to 30 days, one day in the life, and then all of a sudden after 5 days of partying various festivals, फिर लीप आ जाता है, उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं. So honestly एकता कपूर और ये पुलिस वाला ड्रामा जो करती है ना एकता कपूर के शोज में, हर शो में पुलिस का ड्रामा is so weird. ये तो the thing is they are showing a wrong picture, they're painting a wrong picture of the legal system. There is a difference between showing gritty realistic drama ki some people actually got harassed and you're showing their story because these stories exist, we are not denying that they do not exist, versus you're showing that common everyday procedures ko kitna lightly or stupidly dikha rahe. You're painting a wrong picture of police and this is something, ठीक है चलो बाकी कोई प्रोफेशन कुछ नहीं कर पा रहा है, पुलिस तो पुलिस है. Why can't they file a lawsuit against them? I mean, how are you showing come on, Antara,
एक गुंजन सक्सेना जैसी मूवी बनी और इंडियन एयरफोर्स के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफिस सब इन्वॉल्व हुए कि नहीं आर्मी में, आर्म्ड फोर्सेस में women को रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है. They went after Gunjan for that. They went after the real life Gunjan for misrepresentation of her story. Whereas this all had happened with her. They threatened her, right? So वहां पर ये हो सकता है. और हिंदी सीरियल्स में रोज मुंबई पुलिस की धज्जियां उड़ाते हैं. मुंबई पुलिस कुछ बोलता भी नहीं है. इतनी Amazing. गंदी धज्जी, पुलिस की इतनी गंदी धज्जियां ना, कोई नहीं, कोई आप ग्रिटी रियलिस्टिक मूवी में बना लो ना, इतनी गंदी धज्जियां जो लोग ये लोग उड़ाते हैं. ये वही है ना जो बोलते हैं ना, हिंदी मूवीज में भी पुलिस हमेशा क्राइम होने के बाद आती है या टाइम पे कभी नहीं आती. तो ये वही लोग हैं, जहाँ पे इनको नहीं आना होता है वहां ये लोग आ जाते हैं, और जहाँ पे इनको एक्चुअली आना होता है, पहुंचना होता है कभी टाइम पे, क्योंकि ये लोग आ जाएंगे तो लीड्स क्या करेंगे? क्योंकि पुलिस का काम थोड़ी है सबूत ढूंढना, ये काम तो लीड्स का काम है, सबूत ढूंढना, इनोसेंट प्रूव करना, गुंडों से फाइट करना, अपनी जान बचा के भागते भागते दामिनी स्टाइल में कोर्ट में बेस्ट पहुंचना. पार्ट इज अ लॉट ऑफ एकता कपूर सीरीज. अब पुलिस भी नहीं बुलाती है वो लोग, वो महिला मोर्चा बुला, वो ट्रस्ट हाँ, इन महिला मोर्चा. और महिला मोर्चा वो काला व्हाटएवर फेस हाँ. लेके चलती है, लोगों को काला. कुछ भी करते हैं, बट ये जो है ना, ये अच्छा ठीक है, लाइक यू आर ट्राइंग टू शो, लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, एंड अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट वर आस्किंग अबाउट दिस स्टोरी लाइन, कि दे आर ट्राइंग टू raise awareness on this topic, where men also get harassed by these kind of false complaints filed by women. Like in this case, the girl's family filed a complaint that मेरे इस लड़के ने ditch किया इसलिए she committed suicide or something. So journalists were actually interested, and this shows that people were interested, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि what happens in this case, how does one get off, क्योंकि public इमेज तो हमेशा उसी के फेवर में होगा, लड़की के फेवर में होगा जो अब नहीं है, जो मर गई. तो हाउ डू दे डील विद सच अ केस? एंड जर्नलिस्ट ने पूछा कि इतना इंपॉर्टेंट केस चल रहा था, इतना अच्छा वो चल रहा था, आप लोग ने लीप ले लिया, क्यों, मतलब अब कैसे प्रूव होगा? सब लोग ये जानना चाहते थे. तो तब उन्होंने कहा कि नहीं, दैट इज द होल पॉइंट, हमने लीप लिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये बंद हो गया, हम लोग इसको भी दिखाएंगे बाद में. लाइक दे हैव बिल्ड दैट एज अ कॉन्फ्लिक्ट. बहुत ही फ्लिम्जी तरीके से उसको खींचा है, बट पीपल आर इंटरेस्टेड इफ यू शो देम समथिंग डिफरेंट. कि जैसे पिछले सीजन में दे शोड दैट मोलेस्टेशन वाला थिंग, कि अपनी फैमिली में से किसी ने मोलेस्ट किया है, तो how to go against them, how to find proof, how to actually not acquit, what's the opposite, like implicate them for the crime. Implicate them So, for the crime. Yeah, so indicate them for the crime. So I forgot the word. Anyway, तो इतना अच्छा अगर आपके पास you have that, and you have the audience interested, you have them hooked कि भाई इस बंदे को false case में फंसाया गया है, lot, this is a thing that is happening a lot, I'm guessing that's why people are interested. तो ये ड्रामा आपके पास था, ग्रिपिंग ड्रामा था, पर अभी लीप लेना था, तो पूरा उसका आपने धज्जी उड़ा दी. उसको अच्छे से आप प्रूव कर सकते थे कि भाई ये हुआ था, ऐसे हुआ था, इस तरीके से डिफेंड कर सकते. एंड नाउ वी हैव टू वेट फॉर लाइक 2 months, I'm guessing, for the after the hit and miss and everything, that finally this case goes to court and then they prove it. क्योंकि केस तो कोर्ट में जाएगा, ऑडियंस को बहुत मन जानना है कि ये कैसे प्रूव होता है, और सबको पता है कि कोर्ट में जाएगा क्योंकि पुलिस केस हो चुका है, दे आर फरार. So they know that courtroom drama is coming. They know they have the people gripped on it. इसको सही तरीके से भी तो दिखा सकते हैं ना कि the very second day they go to court. Anyway, so here we are talking about the cops of Hindi serials who are Oh my God, how did we forget? I'm sorry. अपना फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में का आईपीएस विराट चौहान. वो तो आईपीएस वो तो सारी फैमिली आईपीएस है. एंड उसका तो मतलब वो कितने क्राइम्स करती है वो फैमिली ऑन अ डेली बेसिस, और आईपीएस ऑफिसर को पता ही नहीं उसकी फैमिली क्राइम करती है. वो पता नहीं, पता होता है तो खुद भी क्राइम करता है, और फिर पता चलता है तो मुझे तो विश्वास ही नहीं होता मेरी ये फैमिली ऐसा कर सकती है. 30 मिनट्स तक ये रिएक्शन देता है, और अगले एपिसोड में टर्न होके बोलता है कि पर परिवार तो परिवार.
Criminal parivar. Anyways, having said that, we literally trolled Hindi serial cops today, and we hope you have some other stories for us about how cops in Hindi serials is supposed to be so unrealistically dumb and incompetent, and how these stories are spun around the incompetency of the law, which sometimes is highly logical as well, because that's really not a process. So, what will it take for Hindi serial directors and producers to really get some legal consultants on board who will tell them that bail कैसे होती है, for example, या चार्जशीट ही इस फाइल कर स्टोरी दो, में bail हो जानी चाहिए, otherwise कोई और crime दिखा दो. चार्जशीट करनी चाहिए पुलिस को इनकी. Bilkul. So with that, we come to the end of today's roast. We hope you enjoyed it and keep listening and watching us in Desi's Are Live. Kahin Kissi Roast will return next week. Take care. Bye.